like to welcome our Chairman and Chancellor, the first person of NIMS University, Professor Dr. Bhuwnesh Sharma sir, for his address. जोरदार तालियां हमारे Chairman and Chancellor sir के लिए. Hon'ble Justice Shri Birendra Kumar ji, the chief guest of this function, and other dignitaries, Bhuwnesh ji, the President of our Council, Principal Madam of the Law College, and सारे यहाँ लॉ कॉलेज के बैठे हुए स्टूडेंट्स, आप सबका मैं इस राजर्षि ऑडिटोरियम में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा, आज हमारे बीच एक देश की बहुत विद्वान लॉ के फील्ड में, तभी उन्होंने इतने उच्चतम पद पे ऑनरेबल जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट बने, श्री वीरेंद्र कुमार जी, उनका रिस्पेक्ट करने के लिए आप सब लोग फिर से खड़े हों एक बार। ऑनरेबल जस्टिस साहब ने अपनी इतनी व्यस्ततम लाइफ में समय निकाला और आप लॉ स्टूडेंट्स को आशीर्वाद देने के लिए आए। आप जितने यहाँ लॉ के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उन सब की एक ही प्रेरणा होती है, या तो आप बहुत बड़े टॉप के लॉयर बने या आप ऑनरेबल जस्टिस बने। तो आपकी प्रेरणा के स्रोत जहाँ पहुँचना चाहते हैं, ऑनरेबल जस्टिस वीरेंद्र कुमार जी यहाँ मौजूद हैं। आज आप मन में प्रतिज्ञा करें कि आप भी आने वाले समय में इतनी मेहनत करेंगे। मैं जस्टिस साहब के बारे में कुछ पढ़ रहा था, तो इन्होंने अपनी जुडिशरी के एग्ज़ाम में कई बार टॉप किया और आज इस मुकाम तक पहुँचे। आज राजस्थान हाई कोर्ट के, स्पेशली जयपुर बेंच के बहुत जाने माने और बहुत ही, जैसा कि मैंने सुना है, उत्तम दर्जे के डिसीजन देने वाले जस्टिस हैं। रियली मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ पर आए और आकर के अपने सरल भाव से ह्यूगो यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। जैसा कि बताया गया पहले कि फादर ऑफ लॉ, उनके नाम से यूनिवर्सिटी रखी गई। तो आप सब लोग, उनका गर्व है और हमें आज हमारे बीच जस्टिस वीरेंद्र कुमार जी के पधारने का गर्व है और एहसानमंद हूँ कि वो यहाँ पर आए। आप जैसे लॉ के बच्चों को वो अभी कुछ आशीर्वाद भी देंगे, कुछ ज्ञान भी देंगे। बस मैं कहना चाहूँगा कि आप सारे लोग बच्चे यहाँ पर हैं, अभी आपका नया बैच आने वाला है। 300-400 नए स्टूडेंट्स इस साल के आ रहे हैं, वो आपको ज्वाइन करेंगे। उनको भी आप जो आज आप सीखेंगे जस्टिस साहब से, उनको बताइएगा अपने जूनियर्स को, और अपने मन में प्रतिज्ञा कीजिएगा कि आपके मन में जो सबसे बड़ा बनने की एक क्षमता है, एक चाह है, उसको आज यहाँ से ऑडिटोरियम से जाएं तो लेके जाएं और ये करें कि यस, हम भी जीवन में बड़े बनेंगे। इस आशीर्वाद के साथ मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा बच्चों को कि अभी 2022 का NIRF का रिजल्ट आया है। NIRF इज़ ए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फोरम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजुकेशन डिपार्टमेंट की, भारत की रैंकिंग है, यूनिवर्सिटी को दी जाती है। ये रैंकिंग में भारत की सारी यूनिवर्सिटियाँ, चाहे IITs हों, IIMs हों, चाहे BHU हों, चाहे साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, सारी और सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, इन सबको एक रैंकिंग दी जाती है। और हमें ये गर्व है कहने का कि राजस्थान में लगातार 2 साल से, जिसका कि मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, वो यूनिवर्सिटी होते हुए हम ऐसी पहली यूनिवर्सिटी 2021 में थे और 2022 में राजस्थान ने कोई रैंक नहीं प्राप्त किया। और हम लोगों को 100 से 150 रैंक बैंक मिला। तो राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी 2021 में भी थी और 22 में हम लोग सेम रैंक में आए हैं। ये सब आप लोगों का, बच्चों का, टीचर्स का, सबका योगदान है कि हम बराबर 2 साल से राजस्थान में बिल्कुल नंबर 1 पे चल रहे हैं। इस आशीर्वाद के साथ
मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। आप खूब पढ़ाई करिए, अच्छा कैंपस है। अब मैं ज़्यादा हिंडर न करके मैं चाहूँगा कि जल्दी से माननीय जस्टिस साहब आपको अपनी कुछ बातें बताएं, आपको मार्गदर्शन करें, जिससे कि जो आपकी मन की प्रेरणा, जो आपको बनना है, वो यहाँ साक्षात मौजूद हैं। तो वही प्रण लेके आप लोग जाएं कि यस, आने वाले समय में कहीं मैं आप लॉ के बच्चों को कहीं मैं भी देखूंगा तो मुझे खुशी होगी कि बच्चों ने आज एक महान जज से प्रेरणा ली और अपने कर्तव्य को पालन करते हुए उस सीढ़ी तक पहुंचे। धन्यवाद। सर को यहाँ पे उनके व्याख्यान के लिए बुलाने से पहले मैं सर के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीरेंद्र कुमार साहब was born in 1963. He completed his LLB degree from Patna Law College in the year 86. He practiced in various civil and criminal matters in Patna Civil Court and Patna High Court. Sir was the topper of his batch in Bihar Superior Judicial Service Examination. Sir joined Bihar Superior Judicial Service as Additional District and Sessions Judge in 97. He held the office of Registrar General, Patna High Court from 2011 to 2014. Before elevation, he was posted as District and Sessions Judge, Patna. He was elevated as an Additional Judge of Patna High Court on 16th November 2016. Honorable Justice Birendra Kumar Sir of Patna High Court joined as the Judge of Rajasthan High Court, Jaipur in the month of December in 21. I'd like to call upon the leading luminary of law, the living legend of law, Honorable Justice Birendra Kumar Sir, for his dialogue on advocacy skills and development. Thank you, sir. A very good evening to the galaxy of legal luminaries and academia present here. Good evening to the managing body, which has taken a lot of pain to organize this function for the students, and above all, the students of NIMS University, for whom this function has been organized, for whose motivation everything has been done here, for enhancing his judicial capability. E-library has been inaugurated today. I am indeed honored to be part of this function, and everything, as soon as I stepped into the premises, I saw the infrastructure and discipline here, and I am convinced that credit goes to Dr. Tomar Sahab for making this vast institution a very disciplined institution. One of the instances I can quote, one of my known or a relative who is a student here, I wanted to meet her because I was for the first time visiting this premise. Then I called her. She was brought before us. She was very afraid. Someone told that, why you are so trembling? तो नहीं, सर ने बुलाकर हमको डांटा है 2-3 रोज पहले, तो लगा कि आज फिर से मुझे डांट लगेगी. All this goes to show that how the person thinks about the discipline in the institution, which is most important part of character development. Unless you are disciplined, you cannot work in any field. One thing I want to share, that when I saw the infrastructure, I was a bit jealous for the reason that in our times there was no such infrastructure at all. You are fortunate that you have everything, air-conditioned hall for prosecuting studies, e-library, you can see any law at the tip of your finger point. All these facilities were not with us.
So you are provided with more and more better infrastructure than we had held. Therefore, you should do and perform far better than us. That is our hope and expectation. We all are expecting from you in the manner. One thing I would like to share that now the things have substantially changed. The manner of judging, the scope of judging, the scope of addressing the court, the limitations, everything has been changed, and the new students who are coming to join the profession are most interested in working with the modern technology. They come with the laptop in the courtroom, everything is there. They address the court from their laptops, and old schools are still carrying the files, big files and everything. These are the facilities you are fortunate to have. The topic today has been selected, a skill of advocacy. What is the purpose of this e-library and library? Only to enhance your legal knowledge. Therefore, in my view, the most important skill of advocacy or being a judge is knowledge of law. There is a proverb that it is not difficult to understand the law, rather it is difficult to find out the law. Therefore, we hope that you people, you students, will go through the law, each and every aspect, prevailing in the different fields of social activities, and that would help you to develop yourself as a good advocate, as a good judge. The whole purpose of this legal education is to impart justice to the needy people. And advocates and judges are part of the justice delivery system. Both are equally responsible, equally stakeholders, and equally distributor of the justice. Therefore, your role of any law graduate, either he is an advocate or he is a judge, is not less than anyone else. The only skill, to my mind, is to study and take grip on all the laws and assist the court according to law. Sometimes you will be confronted with a real offender. Someone has committed serious crime or lighter crime, whichever may be, and comes before you and says that, yes, I have committed the crime, but kindly defend me according to law. It is your duty to defend him according to law, not to divulge his personal communication with you. That is barred under the Evidence Act as well, that privileged communication cannot be divulged to anyone else. Keep everything secret, assist him according to law, don't go either way, deviating from the mainstream, wherever you are standing, whether you are a judge or you are advocate. At all the places you have to do justice with the system, with the institution. Law is there, everyone is aware of the law. The person who is victim of the crime is aware of the legal remedy. The person who has offended the law is aware of the scope and ambit that what punishment would be given to him. Therefore, no personal grudge, no personal prejudice should be there. Everything should be on a straight line, and that would make you a very good advocate, a renowned advocate, and a renowned judge. If you will think that anyhow he should be saved or anyhow he should be defeated, then we may call it also a skill, but actually it is not a skill. It is just
playing fraud with the system. Therefore, in my view, only a skill is to develop your capacity of understanding the law. To develop the capacity, you must read the interpretation of a statute. Interpretations of a statute just teaches you how to read the law. Reading the law is a special skill, and interpretation of a statute teaches you how to read the law. If you read the law correctly, if you understand the law correctly, you will be a great asset for the system dispensing justice to the people. With these words, I just thank you for bearing with me. Thank you.